हर छोटे बड़े को मिले समानता, ना कोई किसी से भी डरे, ना कि कोई किसी से भी डरे। हर घर में फहराएंगे तिरंगा, सब तिरंगे का अभिमान करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आओ नए भारत का निर्माण करें। कुछ कर दिए हमने काम अनोखे, कुछ नए करने का गुमान करें। A very good morning to everyone present here. Today we are gathered here to celebrate Azadi ka Amrit Mahotasav. This is my great privilege and pleasure to welcome you all in today's program. It is said too often we underestimate the power of a touch, a smile, the power of a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around, said by Leo Buscaglia. Now, I would like to welcome Reverend Father Director Dharam Kishore Lakra to the dais for the words of his wisdom. Father, please come to the dais. गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। तो कितनी खुशी की बात है कि हम सभी अपनी भक्ति, अपनी इज्जत, अपना सम्मान भारत देश के लिए देते हैं, देते रहे हैं। लेकिन ये पहली बात है, ये पहली बार है कि हम सभी को इसको संस्कृति के रूप में, एक आदत के रूप में अपने जीवन में डालना है। शायद इसी उद्देश्य से, इसी मतलब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत पिछले वर्ष मार्च 2021 में इसकी शुरुआत की। साबरमती आश्रम से तिरंगा लेकर के पूरे देश में फैलाने का। इसका मतलब यही है कि हमारी जो देशभक्ति है, हम सभी जानते हैं, अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, हमारे मन दिल में है, लेकिन उन्हें किसी न किसी रूप में दिखाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ही केवल दिखाना है, लेकिन ये हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। हमारे रोज़ दिन के कार्य में, गतिविधि में इसकी छाप दिखनी चाहिए। यही शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे देश के कर्णधार चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने इसको अलग अलग स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और अलग अलग स्तर पर इसको मनाने के लिए जोर दिया गया है। और हम चूँकि शैक्षणिक संस्थाओं में हैं, और इसलिए हम शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से किस तरह अपनी देशभक्ति को लोगों को दिखाते हैं, हमारे अगल बगल में जो हैं उनके सामने रखते हैं, और अंत में पूरे देश को कैसे दिखाते हैं। यही इसी मतलब से, इसी मकसद से आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आज कल और परसों इसको करके ख़त्म कर देंगे। और हमारी परंपरा रही है हमारे देश की और हम सबकी कि हम किसी चिन्ह के माध्यम से, किसी सिंबल के माध्यम से हम अपने मन और अपने दिल की, अपने हृदय की बात को रखते हैं, और तब तिरंगा हमारे पूरे देश का एक चिन्ह है,
हमारे देश का चिन्ह है, हमारी स्वतंत्रता का चिन्ह है, हमारे राष्ट्रीयता का चिन्ह है, जो हमेशा हमारे संस्था के मकानों में घरों में फहराता रहे। और जब कभी भी हम उसकी ओर नज़र दिखाएंगे, नज़र डालेंगे, हमें यह एहसास होगा कि हम भारतवासी हैं, और एक भारतवासी होने के नाते हमारा जो कर्तव्य होना चाहिए, हमारी एक जो विशेषता होनी चाहिए एक भारतवर्ष के रूप में, वो जागे, ताकि हम ये एहसास करें हमारा देश एकता, अखंडता में एकता है। हम अलग अलग जाति, वर्ग, धर्म, संस्कृति के हैं, और यही झंडा हम सबको एक भारतीयता की पहचान देगा। तो आइए हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी को संस्था की ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूं कि हम सभी मिलकर के अपने स्तर पर देशभक्ति की इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Father, for your enlightening words and inspiring each one of us gathered here. Now, we have the stories of the unsung heroes presented by the students of PGDM RM batch 2021-23. Now, without taking much of your time, I invite the students to come to the dais to share with us the stories of the unsung heroes. In today's fast-moving world and tough competitive day-to-day life, the youth hardly have the time to remember our rich heritage that is from the past. This becomes most critical whilst the nation celebrates Azadi Ka Divas. The fight against colonial rule in India constitutes a unique narrative, one which is not marred by violence, rather a narrative that is full of variegated stories of valor, bravery, satyagraha, and love, which has put so much of love, dedication, and sacrifice across the length and breadth of our subcontinent. These stories compose the rich Indian culture, heritage, and traditions. Today, I have the privilege to share with you all the life of one of the great heroes called Sucheta Kriplani, one of the unsung heroes of our nations. Sucheta Kriplani was born in Ambala, Punjab in June 1908. She completed her education at Indra Prasad College, Delhi University. Kriplani began her professional career as a teacher of constitutional history at Banaras Hindu University in 1939. In 1936, she married Acharya Kriplani, a Congress party member and a prominent freedom fighter. She became a member of the Congress party in 1938 and served as the secretary for 1.5 years to the Foreign Department and Women's Section. The role in India's independence she played. Kriplani actively participated in the Indian independence movement in 1940s. That includes her involvement in the 1942 Quit India movement. She evaded arrest from the government, although she was eventually arrested in 1944 and was detained for a year. Her contribution towards the making of constitutions. In 1946, Kriplani was elected to the Constituent Assembly from the United Provinces. She was a member
of the Flag Presentation Committee, which presented the first Indian flag before the Constituent Assembly. Her later contributions follows us. As a staunch Gandhian follower, she accompanied Gandhi to Bengal during the Indian partisan raids. Kriplani rehabilitation of refugees during the partition of India. She served as a secretary to the Relief and Rehabilitation Committee set up by the Congress Party in India. Kriplani was one of the first few women parliamentarians in independent India. She was the member of province parliament since 1950 till 52. First Lok Sabha member she was from 1952 to 56 and second Lok Sabha member from 1957 to 62. She had a successful political career in Uttar Pradesh and held important profiles, including member of UP Legislative Assembly from 1943 to 1950 and Minister of Labor, Community Development and Industry. She served as from 1960 till 1963. Kriplani was elected on the Congress Party ticket to become Chief Minister of the state, giving her the distinctions of being the first female Chief Minister of an Indian state. She served the office from October 1963 up to March 1967. Kriplani was a part of several delegations to foreign countries and organizations. She played a key role in parliamentary delegation to Turkey in 1954, International Labour Organization in 1961, United Nations General Assembly in 1949, and the United Nations Seminar on Civic Responsibility and Increased Participation of Asian Women in Public Life in 1956. She passed away in 1974. As a result, let us pause for a while. She has served a lot to our nations. She has shed her tears and blood for our nations. It is our responsibility, being the children of this motherland, to pause for a while and just remember her contributions. Thank you. Now, I kindly request Sister Nirupa to come to the dais to unfold the story of the unsung hero, namely Lakshmi Sehgal. Sister, please. Good morning and Jai Hind to everyone. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। आज हम राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला लक्ष्मी सहगल का जीवन परिचय को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लक्ष्मी सहगल का जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास में एक तमिल परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन था। इनके पिताजी का नाम ए स्वामीनाथन और माता का नाम एवी अम्माकुटी था। इनके पिताजी मद्रास उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता एक समाज सेविका थी और केरल के एक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी परिवार से
ताल्लुक़ रखती थी। इन्होंने क्वीन मेरी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और बाद में चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए सन 1938 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री प्राप्त की। 1 साल बाद उन्होंने स्त्री रोग और प्रसूति में डिप्लोमा प्राप्त किया। इन्होंने चेन्नई स्थित सरकारी कस्तूरबा गांधी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में भी कार्य प्रदान किया है। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। बचपन में समाज में ब्रिटिश शासन की जुल्मी हुकूमत को देख उनके मन में स्वतंत्रता की चिंगारी जलने लगी थी। वह बचपन से ही राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित हो गई थी। उस समय महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन छेड़ा तो लक्ष्मी जी ने भी उसमें हिस्सा लिया था। वर्ष 1943 में अस्थायी व आज़ाद हिंद सरकार की कैबिनेट में पहली महिला सदस्य बनी। वर्ष 1942 में अंग्रेजों ने सिंगापुर को जापानियों को समर्पित कर दिया। उस समय लक्ष्मी सहगल ने घायल लोगों के उपचार के लिए काफ़ी कार्य किया। सिंगापुर में सामान्य लोग, जिसमें मजदूर वर्ग शामिल हैं, उनके ऊपर हो रहे जुल्म को देख उन्होंने निश्चय किया कि अपने देश की आज़ादी के लिए वह कुछ करेगी। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में आए। उस समय लक्ष्मी सहगल उनके विचारों से प्रभावित हो गई। इस समय लक्ष्मी जी ने स्वयं सुभाष चंद्र बोस को अपना परिचय दिया था और लगभग 1 घंटे की मुलाकात के बीच लक्ष्मी जी ने सुभाष चंद्र बोस से आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मी के भीतर आज़ादी का जज्बा देखने के बाद नेताजी ने उनके नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाने की घोषणा कर दी, जिसमें वह वीर नारियां शामिल की गई जो देश के लिए अपनी जान दे सकती थीं। 22 अक्टूबर 1943 में डॉक्टर लक्ष्मी ने रानी झांसी रेजिमेंट के कैप्टन पद पर कार्यभार संभाला। उनके महान कार्य की बदौलत उन्हें कर्नल पद भी दिया गया। इस तरह लक्ष्मी सहगल कर्नल पद हासिल करने वाली एशिया की प्रथम महिला बनी, लेकिन वह लोगों के मन में कप्तान लक्ष्मी के रूप में ही प्रसिद्ध रही। 4 मार्च 1946 को आज़ाद हिंद फौज की हार के बाद ब्रिटिशों द्वारा वह पकड़ी गई, लेकिन जल्द ही उन्हें छोड़ दिया गया। सन 1947 में लक्ष्मी जी ने प्रेम कुमार सहगल से विवाह किया और कानपुर में स्थायी हो गई। उसके बाद वह वंचितों की सेवा में जुट गई। INA की बर्मा यात्रा का एक हिस्सा बनने के लिए मई 1945 में ब्रिटिश सेना से कप्तान लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जुलाई 2012 को हार्ट अटैक के कारण 97 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके शरीर को कानपुर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल रिसर्च के लिए दान में दिया गया। लक्ष्मी सहगल के रोचक तथ्य।
उनकी याद में कानपुर में कप्तान लक्ष्मी सहगल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। सन 1998 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2010 में उन्हें डॉक्टरेट उपाधि से कलिकत यूनिवर्सिटी द्वारा सम्मानित किया गया। फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई, फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई। हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश पर, हम उनको सलाम करते हैं। जय हिंद। Thank you, sister, for sharing with us the life story of our great hero, Lakshmi Sehgal. It is said, the true heroes are those who go extra mile for someone else, who sacrifice their lives for a greater purpose. That's the result of which we are enjoying today the independence India, and every year we have the privilege to celebrate this freedom. Now, I kindly invite Archana Lakra to the dais to share with us the life of Pir Ali Khan, one of the great heroes of our country. Good morning to all present here. History is the evidence that behind the formation of any country, there are millions of heroes who shed their blood or who sacrificed their everything for the honor of their nation. Most of the names are eminently recognized and praised not only by the historians but also by the nations. But few of the names have been ignored, unfortunately, by the author of history. However, we must name them as our unsung heroes, which means they are still incredible for us. In the era of independence, there are millions of activists who took part in Indian freedom movement. One of them is Pir Ali Khan. He was born in Mohammadpur in Azamgarh district of Uttar Pradesh. He was an Indian revolutionary and rebel who participated in the Indian independence movement. He was brought by Zamindar Nawab Mir Abdullah as he fled away from his home at the age of 7. Zamindar Nawab had good relation externally with the British, but internally he was against them. Pir Ali Khan developed the same feelings by the time. Through his childhood, he had brought up with the son of Nawab, whose name was Lutf Ali Khan. He got his education and had a command on Arabic, Urdu, and Persian languages. When he grew up, he opened a book shop. His shop was popular among people. Gradually, he developed hatred feeling towards the British rule. And soon his shop became a meeting point for the freedom fighters and the soldiers. He met the Indian soldiers, Danapur cantonment. He arose many Indian soldiers and freedom fighters to fight against the British rulers.
He arranged many campaigns in this respect and became an integral part of the rebellion of 1857. When he was plotting with the soldiers of Danapur cantonment, two letters from them fell into British hands. They became aware of Peer Ali's involvement. Ali realized what had happened, planned to attack the British and gather those interested. He collected 50 guns with the help of his co-workers, Maulvi Mehdi, and distributed among his group members. On July 4, 1857, Ali and 33 followers were arrested. Most of them were hanged the next day without a hearing. Peer Ali Khan was brutally tortured and cross-examined. On July 7th, he was hanged. Lastly, I would like to quote, फांसी चढ़ गए और सीना पर गोली खाए, फांसी चढ़ गए और सीना पर गोली खाए, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश पर, जो मिट गए देश पर, हम उनको सलाम करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं. थैंक यू. Thank you, Archana, for sharing with us the life story of a great hero called Peer Ali Khan. It is said, you are an unsung heroes of someone's life. You are an unsung heroes of someone's life. Finish your story for them. That's what the leaders of our country did. Don't give it up. Now, kindly, I call upon Angel Sharon Panna to the dais to share with us the life of Durgabai Deshmukh. Please come. Durgabai Deshmukh. Durgabai Deshmukh, also known as Lady Deshmukh, was an Indian freedom fighter. Durgabai Deshmukh, Lady Deshmukh, was an Indian freedom fighter, lawyer, social worker, and a politician. She was a member of the Constituent Assembly of India and of the Planning Commission of India, a public activist for women's emancipation. She founded the Andhra Mahila Sabha in 1937. She was also the founder chairperson of the Central Social Welfare Board. In 1953, she married C.D. Deshmukh, the first Indian governor of the Reserve Bank of India and finance minister in India's central cabinet from 1950 to 1956. She was then elected to the Constituent Assembly from the Madras province. She was the only woman in the panel of chairmen in the Constituent Assembly. She proposed Hindustani, Hindu plus Urdu as the national language of India, but also expressed fear about the forceful campaign for Hindi in South India. She proposed a period of 15 years of status to enable all the non-Hindi speakers to adopt and learn Hindi. Durgabai led numerous satyagraha movements and was a member of the Constituent Assembly of India. She played a prominent role in Indian freedom movement. At the Khadi exhibition in 1923, she was in charge of ensuring that all visitors had proper tickets before entering. She even forbade Pandit Nehru from entering until the organizers gave him a ticket and she let him pass. Thank you.
Thank you, Sharon, for sharing with us the life story of our great hero called Durgabai Deshmukh. It is easy to kill some individuals. It is easy to kill some individuals, but you cannot kill the idea they have. Great empires crumbled the idea they shared to the countries. Great empires crumbled just because of the ideas, while the idea survived. Now I call upon Romi Kujur to the dais to share with us the life of a tribal woman. Romi, please come to the dais. No revolution in the world has been successful without women. History is a witness that women have changed the face of revolutions with their courage. Who doesn't know Lakshmi Bai, Aruna Asaf Ali, Sarojini Naidu, and many more who played decisive roles in the fight for India's freedom? The Jharkhand movement also saw something like this, even though there is a huge difference between the India's freedom struggle and the fight for Jharkhand as a separate state. Jharkhand movement went for a long time. It is being said that during this time there was no popular women leaders, but the truth is that the women played an important role in the movement. The Jharkhand women fought courageously, not only in the movement but also outside attacks and revolts against Britishers. The history of Jharkhand women's struggle is very old. The Jharkhand has given birth to many brave women. Have you ever heard of Singi Dai, Kaili Dai and Champa Dai? I guess not. तो आइए आज उनकी कहानी सुनते हैं। सिंगी दई, कैली दई, चंपाई दई रोहतासगढ़ के राजा रुईदास की बेटियां थीं, जिनकी अगुवाई में महिलाएं अपनी राज्य को बचाने के लिए पुरुषों का वेश धारण कर हाथ में टांगी, बलवा, फारसी, हसुआ, बैठी दौली एवं तीर धनुष लेकर दुश्मनों से कड़ा मुकाबला किया था। कहा जाता है कि रोहतासगढ़ में बसे उरांव आदिवासियों पर तुर्क सेना के द्वारा कई बार आक्रमण हुआ। बार बार आक्रमण करने के बावजूद वे रोहतासगढ़ पर फतेह हासिल नहीं कर पा रहे थे। दुश्मन आदिवासियों की कमजोरी तलाशने लगे। तभी इन दुश्मनों को पता चला कि आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल होता है। इस त्योहार में वे 7 सखुओं के पेड़ और उसके फूल की पूजा करते हैं, जिसको तोड़ने के लिए गांव के सारे पुरुष नाचते गाते हुए जंगल की ओर जाते हैं और महिलाएं घर में रहकर पकवान बनाती है। दुश्मनों को इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता था। सरहुल के दिन गांव के सारे पुरुष जंगल जाते और दुश्मनों ने देखा कि ये रोहतासगढ़ में आक्रमण करने का सबसे अच्छा मौका है। रोहतासगढ़ में आक्रमण होता देख महिलाएं अपने राज्य को बचाने के लिए पुरुषों का वेश धारण कर टांगी, बलवा, फारसी, सुआ बैठी, दौती एवं तीर धनुष लेकर रोहतासगढ़ के राजा रुईदास की बेटियां सिंगी दई, कैली दई एवं चंपी दई की अगुवाई में दुश्मनों से कड़ा मुकाबला किया। सभी दुश्मनों के नाकों तले चने दबवा दिए। युद्ध के बाद विजय स्वरूप सभी महिलाएं माथे में गोदना गुदवाई, विच इज नाउअडेज कॉल्ड टैटूज। यह निशानी उनकी वीरता का प्रतीक है। आदिवासी महिलाओं की इसी वीरता की याद में हर 12 वर्ष रोहतासगढ़ की वीरांगनाओं की याद में जनी शिकार का आयोजन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जनी शिकार का त्यौहार 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। यह त्यौहार आदिवासी महिलाओं की वीर गाथा को दर्शाती है। जनी शिकार साहस व वीरता का प्रतीक है। I guess you must have heard about Sidhu and Kanu, the leaders and spearheaders of Santhal uprising. Sidhu and Kanu Murmu
were ब्रदर्स जिन्होंने 1855 के संथाल विद्रोह की नेतृत्व की थी। बट यह कहानी उन भाइयों की नहीं है, उन बहनों की है जो उनके साथ थी। संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन और भ्रष्ट जमींदारी प्रथा का विरोध करती थी। 1855 में जब बोगनाडी में सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था तो उनकी दो बहनें फूलो और झानो अंधेरे में आई और दुश्मनों के शिविर में भाग आए। अपने कुल्हाड़ी चढ़ाकर 21 सैनिकों को खत्म कर दिया। क्रांतिकारी उत्साह में उनके हिस्से का विद्रोह बहुत योगदान बड़ा माना जाता है। इससे उनके साथियों को हौसला बढ़ा। वे आदिवासी न्यायिकों का समूह बनाते हैं और जिन्होंने अपने पुरुषों साथियों के साथ लड़ाई लड़ी थी उनका सम्मान करते हैं। So these were the women of Ulgulan. So should we call them heroes? I guess not. I call them sheroes. Thank you. Thank you, Romy, for your great sharing with us. Now, as we have heard the stories of the unsung heroes, we have added a surprise to our program. That is for all the professors and all those who have heard the stories of the unsung heroes. This is a quiz that we have added to our program. It was a surprise, that's why we did not announce it. So we have formed few questions for all of you, and there is a surprise prize too. If anyone says the right answer, will be given awarded with, we have nothing, we have chocolate with us. We want to award with chocolates. So the question goes, name the languages in which Pir Ali Khan had a command. Option goes Arabic, Urdu, and Persian language. No? Please raise your hand who knows the answer. Yes, sir. Urdu. Yes, sir is right. जल्दी भेजो। Next question. In which year Pir Ali Khan and his followers were arrested? There is no option given. Yes, ma'am. Year. In which year? No. You can still try. Yes, sir? No, sir, wrong answer. Students, except Archana. Yes. Question is, yes, ma'am? No. No, ma'am. Sorry. One more chance. In which year P. Ali Khan and his followers were arrested? Yes, right answer, sister. She helped you? Yes, we have some more questions for you. Durga Bai Deshmukh was also known as what? She was known as a special lady. No, sir. Durga Bai Deshmukh was also known as Des. क्या है? It is very simple answer. When I say, you say, oh my God, you will say. It's very simple answer related to ladies. I gave the clue. Durga Bai Deshmukh was also known as
Yes, ma'am? Yes, ma'am? No. She was known as an Iron Lady. Second question goes, who proposed Hindustani as the national language of India? Who proposed Hindustani, Hindi and Urdu as the national language of India? Yes, ma'am? Yes, ma'am. Right answer. One more questions for you. फूलो एंड झानो ने कितने सैनिक की हटाई की थी सॉरी हत्या की थी यस यस सर यू हैव द आंसर विद यू यस क्वेश्चन गोस सिंगी दाई चंपा दाई और कायली दाई की वीरता की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है आई डोंट नो द आंसर इज विथ रोमी आई डोंट हैव यस मैम सरदुल रॉन्ग आंसर क्या है फूलों एंड झानो ने कितने सैनिकों की हत्या की थी हो गया सॉरी 21 यस वी हैव टू मोर क्वेश्चंस हु इज द कैप्टन ऑफ झांसी रेजिमेंट Sir is getting all the answers, so no chance for sir. Somebody else? Please. This question preferred for the man, all the ladies present here, because I repeat the question. Who is the captain of Jhansi Regiment? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are right. In which year British dedicated to Japanese? Which year? In which year British dedicated to Japanese? Japanese. Yeah. In which year British dedicated to Japanese? Yes. No, ma'am. Ma'am is closer to the answer. No, ma'am. Yes, father? You are closer to the answer. No. You are closer to the answer. You can try. Yes, ma'am? No. Yeah, one more. I can give the clue. It is the year between 1938 and 45. Father is close to the answer. Yeah. Yes, ma'am. Right answer. 42. 1942. Now the quiz is over. Huh? Ma'am, Uma ma'am, Dean ma'am. Now we have almost finished the quiz. It is said, the gratitude turns what we have into enough. The gratitude turns what we have into enough and more. It turns denial into acceptance. It turns denial into acceptance, chaos into order,
confusion into clarity. It makes sense of our past. It brings peace for today and creates a vision for tomorrow. Now I cordially invite Reverend Father Fulchand Kujur, the Vice Director of our institutions, to the dais to propose vote of thanks. Father, please. आज़ादी के अमृत उत्सव सब कोई अपना विभिन्न भिन्न तरीकों से मना रहा है। हम भी यहाँ पे संस्था के रूप में कुछ एक लोग और सब कोई यहाँ एकत्र होकर के इसको अपने तरीके से हम लोग भी मना रहे हैं। इस उत्सव को मनाने के लिए प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की और सांस्कृतिक मंत्रालय को निर्देश दिया कि हर घर हर झंडा इसको लेकर के उत्सव को मनाएं। इसका एक ही उद्देश्य था और इसका एक ही उद्देश्य है कि इसके प्रति न केवल पहले हम जानते हैं कि कैसे संस्था में सिर्फ इसका उत्सव मनाया जाता था और बहुत सारे लोग इसमें भाग ही नहीं ले पाते थे, इसलिए प्रत्येक आदमियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर घर हर झंडा का ये अभियान का इसकी शुरुआत इसकी की गई है और इसको हम लोग मनाने के लिए यहाँ पे अपने तरीके से एकत्र हुए हैं। मैं सर्वप्रथम संस्था के प्रमुख डायरेक्टर फादर धर्मकिशोर को धन्यवाद देना चाहता हूँ उनका प्रारंभिक उद्बोधन के लिए, स्वागत उद्बोधन के लिए, और उसी के साथ उन्होंने आज के इस छोटे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उसको तहे दिल से धन्यवाद। तो जोर से ताली बजा देंगे। आज का कार्यक्रम की शुरुआत हम झंडोत्तोलन के साथ किए और इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ रहा, हम लोगों का सहकर्मियों का, साथ में स्टाफ का, और हम सभी ने वहाँ एकत्र होकर के राष्ट्रगान के साथ में उस कार्यक्रम को संपन्न किया शुरुआत में ही। तो सबों की सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में अनसंग हीरोज़ के बारे में हमारे विद्यार्थीगण इन्होंने अपने सुंदर वक्तव्य के माध्यम से इनके बारे में जानकारी दिए। इसमें लक्ष्मी, सिस्टर निरूपा, अर्चना, मानसी नहीं है, रोमी, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको बताया और राष्ट्रध्वज के प्रति जो सम्मान बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं, इस आज़ादी को मनाने के लिए, 75वें वर्षगांठ मनाने के लिए, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने इसके साथ में सुन करके, इनके जीवन की कथा के बारे में सुन करके इसको हमने इसकी शुरुआत की है। हम इनके सुंदर प्रस्तुति के लिए इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो ताली बजा देंगे जोर से। साथ ही हमारे मीडिया मैन, और इधर शायद मेरे ख्याल से ये प्रसारित हो रहा है ऑनलाइन ऐसे करके यहाँ पे, हाँ, और इसका व्यवस्थापन के लिए जो कोई भी इसमें अपना हाथ बटाया, कल से ही अरेंजमेंट्स करने के लिए और ये सबका व्यवस्थापन के लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में डीन और उसके जितने भी सहयोगी लोग हैं जिन्होंने अच्छी तरह से क्रमबद्ध इसकी योजना बनाई, आज का समारोह को संपन्न करने के लिए, आज का कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए, इसलिए डीन और उसके जितने भी सहयोगी हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। और अंत में अच्छा सहभागी होने के लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Father, for your great acknowledgement and thankful heart.
Now we have an information to be shared. For that, I would like to call Anshul sir for the... Sir, please. Thank you, Lakshmi. We are celebrating this according to the guidelines of AICT. तो उसमें there are two requirements. आप लोग को जब भी मौका मिले, we are preparing the flags for the प्रभात फेरी, मगर वो प्रभात फेरी नहीं है, बाइक रैली है. So whenever you get an opportunity, please take a selfie with the flag and post it in our staff group. और स्टूडेंट्स अगर लें तो प्लीज़ आप अपने क्लास के ग्रुप में वो फ्लैग के साथ सेल्फी ले पोस्ट करें. और आपको एक वेबसाइट उस पर शेयर करेंगे. वेबसाइट का नाम है harghartiranga.com. इसमें जैसे आप जाएंगे आपको पिन करने का ऑप्शन मिलेगा, आपकी जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर आपने फ्लैग के साथ फ़ोटो ली है. तो प्लीज़ उसमें जाकर के वी हैव टू पिन, और जब आप वो पिन करें तो उसका स्क्रीनशॉट भी स्टाफ ग्रुप में और क्लास ग्रुप में शेयर करें, बिकॉज वी हैव टू रिपोर्ट सेंड ऑल दिस इन अ फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट टू द AICT. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दैट इंस्ट्रक्शंस. Thank you, sir, for the information that you have shared with us. Let us remember and pray to the Almighty the prayer of Rabindranath Tagore. Where the mind is without fear and the head is held high. Where the mind is without fear and the head held high. Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where words come out from the depths of truth. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee. For the last slogan, I would like to request all of you to stand. So let's together repeat this slogan, Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much for your kind participation. Thank you so much. Now we have the tea break, I think. Tea and biscuits is provided. Please have it.